Lecture 10 Marketing Considerations. कंटेंट फॉर द कोर्स। ये सभी कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले अपनी वीडियोस में। Contents for session 10. In this session, we will discuss about selecting the target market, market strategy, pricing strategies and marketing of services, and export marketing. Introduction. Marketing plays a major role in our daily lives. Each day is filled with consuming product made available by a marketer. Marketing is responsible for satisfying customers, which in turn increase our standard of living and quality of life. In continuation with the previous slide, let's discuss this. The strategy for marketing good produced by entrepreneur must therefore be ultimately beneficial to the consumers. No consumer is going to purchase product or goods or services unless he is satisfied with the quality and, wherever necessary, by an efficient after-sales service. This unit will help to understand the various aspects of marketing management. Let's discuss selecting the target market. The target market represents a group of individuals who have similar needs, perceptions, and interests. They show an inclination towards similar brands and respond equally to market fluctuations. Individuals who think on the same lines and have similar preferences form a target audience. Now let's see how to choose a target market. First, conduct market research and industry analysis. Second, understand customer needs and preferences. Third, analyzes the market competition and product pricing. And last, segment the market and create effective market strategies. Now let's discuss the marketing strategy. Small business can gain competitive advantage over large competitors by tailoring their product or services to meet the demands of the individual customers. This tailoring can be done through the means of the product or services offered, price, promotion, and distribution. The above are known as the marketing mix. Another advantage is in that small businesses offer a more personalized interaction with the customers. First of all, a marketing strategy should take advantage of both online and offline networking. This is probably the single most important you can look into. As a small business, you will find that one of your first and most important hurdles is simply getting people to know that you exist. If people do not know you are started a small business and that you have amazing visit or services to sell, they are not going to ask to buy those widgets or hire you for those services, regardless of how wonderful and amazing they might be. So your first job a small business entrepreneur will be to get the word out. Let's discuss market strategy. One way to look at strategies to grow your business is through the way you will use products and markets or consumers. Now let's discuss this with the case study MGinger. MGinger is the first of its kind opt-in permission-based mobile marketing platform in India. MGinger is a service providing targeted advertisement on mobile phones. The advertisements are on a consumer base who have opted into the services. The consumer base is built through a registration process in which the consumers specify their commercial interests
maximum number of ads they would like to receive in a day, or a convenient time slot, and their demographic information. Apart from getting information selected to their particular interest, the consumer also receive monetary initiatives from every ad they themselves receive, and for each ad received in their network up to level of referrals, advertisers leverage the service to search for and select consumer based on their commercial interest, locations, demographics, and other criteria, and send specific advertisements to their target audience. And also this without the fear of incurring even a single consumer worth. The MGenCRE platform solves critical problems like content composition, cost of campaign, and return of investment measurability for advertisers. Few points we are going to discuss in coming slides are current product or current market, current product or new product or current market, new product or new market. Let's discuss market strategy for current product and current market. Market penetration is a strategy of increasing your share of existing markets. You might achieve this by raising customer awareness of your product and services or finding new customers. Second, current product, new market. Market development is a strategy of finding and entering new markets with your current product or service range. The new market could be the new region, new country, or a new segment of the market. It often requires firms to adopt new ways of doing businesses and so has consequences far beyond simply offering new products, services in a new market. It is therefore usually a strategy to be adopted when other options are not feasible. Now let's discuss the pricing method. First is markup pricing. The most elementary pricing method is to add standard markup to the product cost. Construction companies should submit the bids by estimating the total project cost and adding the standard markup of their cost. Next is target return pricing. Target return pricing, the firm determines the price that would yield its target rate of return on investment. Target pricing is used by General Motors, which price its automobile to achieve a 15 to 20 ROI. The formula of target return pricing is target return pricing equal to unit cost plus derived return into invested capital upon unit sales. Pre-received value pricing. An increasing number of companies are basing their price on the product pre-received value. They see the buyer prescription of value, not the seller cost. As the key of pricing, they use the non-pricing variable in the marketing mix to build up pre-received value in the buyer's mind. Price is set to capture the prescribed value. Next is value pricing. Value pricing. In recent years, survival companies had adopted value pricing in which they charge a fairly low price for a high quality offering. Value pricing say that the price should represent a high value offer to consumers. Next is going rate pricing. Going rate pricing. In going rate pricing, the firms pay less attention to its own cost or demand and bases its price largely on competitor price. Last method of pricing is sealed bid pricing. Competition-oriented pricing is common where firms submit sealed bids for jobs.
The firm bases its prices on expectations of how competitors will price rather than on a real relation to the firm cost or demand. The firm wants to win the contract and winning normally requires submit a low price than the competition. At the same time, the firm cannot set its price below cost without worsening its position. Let's discuss service marketing. Kotler defines service marketing as an activity that one party offers another, that is essential, tangible, and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to the physical product. The four main characteristics of service are intangibility, inseparability, variability, perishability. Let's discuss pricing strategies and marketing of services. Pricing is an important function of marketing. Price is the exchange value of the product. It is the amount of money or other products needed to acquire a product. Barter is the exchange of the products for other products. When developing a marketing program, an organization can compete on the basis of price and non-price factors. So few are the pricing strategies that organization must keep in mind before setting the price. Let's discuss export marketing. Export marketing means exporting goods to other countries of the world. It involves lengthy procedures and formalities. Basically, export marketing includes the management of marketing activities for products which cross the national boundaries of the country. Now let's discuss the features of export marketing. First is systematic process. Export marketing is a systematic process of developing and distributing goods and services in overseas market. The export marketing manager needs to undertake various marketing activities such as marketing research, product design, branding, packaging, pricing, promotion, etc. To undertake the various marketing activities, the export marketing manager should collect the right information from the right source, analyze it properly, and take the time for the systematic export marketing decision. Next feature is large scale operation. Normally, export marketing is undertaking on a large scale. Emphasis is placed on large orders in order to obtain economic in large sole proprietorship and distribution of goods. The economics of large scale helps the exporter to quite competition prices and in overseas market. Exporting goods in small quantities is costly due to the heavy transportation cost and other formalities. Next feature is customer focus. The focus of export marketing is on the customer. The exporter needs to identify customers' needs and wants and accordingly design and develop product to generate and enhance customer satisfaction. The focus on customer will not only bring it higher sale in the overseas market, but it also improve and enhance goodwill of the firm. Next is trade barriers. Export marketing is not free like internal marketing. There are various trade barriers because of the protective policies of different countries. Tariff and non-tariff barriers are used by countries for restricting import. The export marketing manager must have a good knowledge of trade barriers imposed by importing countries. Next is three-phased competition. In export markets, exporters have to face three-phased competition, that is, competition from the three angles: from the other supplies of the exporters countries, from the local producer of import countries, and from the exporters of the competing nations. Next is very important feature is documentation.
Export marketing is subject to various documentation formalities. Exporters requires various documents to submit then to various authorities such as customers, port trust, etc. The documentation includes shipping bills, invoices, certificate of origin, etc. Next point is foreign exchange regulation. Export trade is subject to foreign exchange regulation imposed by different countries. These regulations relate to payment and collection of export procedures. Such restrictions affect free movement of goods among the countries of the world. Next is marketing mix. Export marketing requires the right marketing mix for the target markets. That is, exporting the right product at the right place at the right time and at the right position and right promotion. The exporter can adopt different marketing mixes for different exporter markets so as to maximize exports and earn higher rate of return. Next point is international marketing research. Export marketing required the support of marketing research in the form of survey, product research and development at its highly competitive. Various challenges identified of the needs and want of foreign buyers in export marketing can be dealt with through international marketing research. Next and last feature is spreading of risk. Export marketing helps to spread risk of businesses. Normally, export firms sell in a number of overseas markets. If they are affected by risks or losses in one market, they may be able to spread business risk due to the good return from some other markets. Now let's discuss the present problems or difficulties faced by Indian exporters. At present, Indian exporters faced a number of problems or difficulties. The problem demotivates the business firm to enter into the foreign market. The following problems are: first, recession in world market. The world market faced recession in 2008, and in the first half of 2009 the recession was triggered due to the subprime crisis of USA in September 2007. Due to recession, the demand of survival Indian items such as gems and jewelry, textile and clothing, and other items were badly hit. During recession, exporters get low orders from the overseas. Therefore, the exporter suffers a loss. Next is technological differences. The developed countries are equipped with the technical things and they are capable in transforming raw material into furnished good on a large scale. Less developed countries, on the other hand, have a lack of technical knowledge and latest equipments. Hence, it will lead to the loop-sided development in the international market. Now let's discuss the next point, that is reduction in export incentives. Over the year, the Government of India has reduced export incentives such as reduction in DBK rates, withdrawal of income tax benefits for majority of exporters, etc. The next point is survival competition in global marketing. Export marketing is highly competitive. This competition relates to pricing, quality, production cost, sale promotion, techniques used. Indian exporters faced three-fourth competition while exporting. Such competition is one special problem to the exporters. हाय, आइए ज़रा चाय पर चाय की चर्चा करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चाय।
दोस्तों को करीब लाती है और स्ट्रेस को दूर भगाती है। It has a special place in our hearts. Our day begins with चाय और मेरा तो खत्म भी चाय के साथ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चाय को लोगों ने अपना व्यापार भी बनाया है। बड़े से लेकर छोटे बिजनेसेस ने चाय और उसके कई प्रकारों को अपने व्यवसाय का आधार बनाया है। तो आज हम ऐसे ही 2 बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भैया जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिकता है? मैम वड़ा पाव हो गया, सैंडविच हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर, गार्लिक ब्रेड। अच्छा, तो आपके यहाँ कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं? मैं 15-20। तो जैसे आप ये चाय बनाते हैं तो ये कितने टाइप की चाय है आपके पास? ये हमें टोटल होगी 15-20 तरह की चाय है। और जैसे आपकी यहाँ की एडवर्टीजमेंट आप कैसे करते हैं? इंस्टाग्राम पे है अपना चाय चटोरे @ तो आपके यहाँ चाय चटोरी के लिए ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी वगैरह है? होम डिलीवरी तो नहीं है, जोमेटो पे आएगा मैम। तो उसमें भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो यहाँ फिजिकल स्टोर में अवेलेबल होता है? ओके। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो कैसे टाइप के कस्टमर्स आते हैं? जैसे बच्चे, बूढ़े या कैसे? मैम सारे ही आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, बाकी जो घूमने फिरने आते हैं वो भी आते हैं। हेलो गाइस। हेलो सर। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ सर, बिल्कुल। कहाँ के स्टूडेंट्स हैं? कॉलेज में? कॉलेज। ओके। सो आई सी कि आप चाय पी रहे हो। हाँ जी। तो चाय पीने आपको इसके बारे में कैसे पता चला, इस शॉप के बारे में? सर थोड़े से रेफरेंस से, लाइक फ्रेंड्स वगैरह के रेफरेंस से पता लगा, और मतलब इंस्टाग्राम पे ये मतलब एड्स वगैरह लगाते रहते तो उससे भी पता लगता रहता। ओके। तो चाय अच्छी लगती है यहाँ की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। क्या अच्छा लगता है, मतलब खास तौर पे इफ आई आस्क के कौन सी चीज, क्या स्पेशल? लाइक सर फ्लेवर्स अच्छे होते हैं। लाइक आपको चाय से ना अलग अलग तरह के फ्लेवर्स की वो खुशबू, टेस्ट, खुशबू मतलब अच्छे लगते हैं। कुल्हड़ भी मिलती है एंड चाय तो पहला प्यार है इंडियन का। आप ये समझ सकते हैं कि हाइजीन भी काफी है। हाँ। हाइजीन तो इस वजह से भी यहाँ पे आना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो इसलिए मतलब वो टी स्टॉल जो होता है जहाँ पे नीचे बैठ के बनाते हैं चाय, तो उससे ये बेटर ऑप्शन है। साफ सफाई भी ज्यादा है सर, थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट बेटर ऑप्शन है। थोड़ा सा कॉस्टली, हाँ, बेटर ऑप्शन। और उसके साथ में फ्लेवर्स, म्यूजिक। चल ठीक है। तो एम्बियंस अच्छी है और माहौल अच्छा है, तो गपशप मारने के लिए इट इज बेटर। बिल्कुल। चलो बैठो आराम से गपशप मारो। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। अच्छा, आप कब से यहाँ पे चाय का कर रहे हैं काम? मैं 2015 से। 2015 से, तो हो गए करीब 8 साल, 7-8 साल। कितनी चाय बिक जाती है पूरे दिन में, कितने कप मतलब? 100-150 कप। 100-150 कप। अच्छा, आपने ऑनलाइन का भी यहाँ रखा हुआ है? ऑनलाइन ये तो जब से नोटबंदी हुई तब से रखा हुआ है। नोटबंदी के बाद से। तो इससे क्या सेल पे कुछ फर्क पड़ा है, मतलब कम हुई है या ज़्यादा हुई है? नहीं, बराबर ही है। वैसे ही है? बस ये है कि स्टूडेंट है, पास में कॉलेज है, वो ज़्यादा करते हैं ना पेटिंग। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ऐसे कोई कभी होता है कि आपने यहाँ दुकान खोली है तो कोई आसपास से कोई परेशानी या कोई पुलिस वाले जैसे आ जाते हैं, कुछ तंग करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, पहले करते थे तो लाइसेंस बन गया हमारा। अच्छा, लाइसेंस बन गया, तो मतलब आप लीगली यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओके। दोनों जगह बात करके हमने ये समझा कि कितने अलग अलग तरीके से चाय को एक स्मॉल स्केल बिजनेस के रूप में खड़ा किया जा सकता है। चाय एक ब्रांड है भी और नहीं भी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए एडवर्टाइज करना और भी आसान हो गया है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है। कोई इसके फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कोई प्रेजेंटेशन के साथ। कांच के ग्लास से लेके कुल्हड़ तक का सफ़र मार्केटिंग की ही देन है। यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के आने के बाद ये सारा क्षेत्र स्मॉल बिजनेसेस के चैलेंजेस को कम कर देता है। चाय है तो एक, लेकिन अनेक भी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे देश में लोगों की ज़रूरत है। थक के जब घर पहुंचते हैं तो एक कप चाय अमृत जैसी लगती है। काम करते करते बोर हो जाओ तो चाय की ब्रेक एनर्जाइज कर देती है। दोस्तों के साथ बातें चाय के बिना अधूरी सी लगती हैं। तो चाय जब एक ज़रूरत है तो मार्केटिंग का सवाल ही क्यों? जो मार्केटिंग है वो जब से दुनिया बनी है और इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी उसका इम्पोर्टेंस वही रहा है, बट नो डाउट उसके चैनल्स चेंज होते गए हैं कि मार्केटिंग की कैसे जाए, राइट। तो मार्केटिंग अगर हम देखें तो दो सेगमेंट में दे सकते हैं, एक लार्ज बिजनेस होता है, एक स्मॉल बिजनेस होता है, और स्मॉल में भी एक सेगमेंट और होता है जिसको हम शॉप और उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। तो लार्ज बिजनेस में चूंकि उनका फाइनेंस काफ़ी अवेलेबल होता है तो उनके पास सोर्सेज भी बहुत होते हैं मार्केटिंग करने के, कस्टमर तक पहुंचने के, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के। बट जहां तक हम बात करते हैं एक स्मॉल बिजनेस की या शॉप की, तो उसके पास सबसे बड़ा जो कॉन्स्टेंट होता है वो होता है कि उसके पास फाइनेंस फैसिलिटी कम अवेलेबल होती है। बट स्टिल दे वांट टू डू द मार्केटिंग बिकॉज कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उनके बीच में भी बहुत कंपटीशन है। जैसे हम चाय के ऊपर बात कर रहे हैं कि चाय एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट है जो कहीं भी मिल जाता है, राइट। तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली आप मार्केटिंग में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप क्वालिटी फोकस करेंगे। और चूंकि फाइनेंस कम है तो आप फ्री सोर्सेज जो अवेलेबल है मार्केटिंग है, लाइक फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, उनके थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। और उससे भी ऊपर जो चीज काम करेगी वो काम करेगी माउथ पब्लिसिटी, कि एक बंदा आया चाय पी के गया, उसको आपकी चाय अच्छी लगी, वो नेक्स्ट टाइम 4 फ्रेंड्स के साथ आएगा, 4 फिर 4 के साथ आएगा, तो ये मल्टीपल होएगा और यू विल वंडर कि आपकी क्वालिटी इटसेल्फ बिकम्स द टूल ऑफ मार्केटिंग। चाय पे बेस्ड स्मॉल बिजनेसेस की मार्केटिंग नीड्स अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, तो दोनों ही अपनी एडवर्टाइजिंग अलग अलग ढंग से करते हैं। कुल्हड़ चाय को ब्रांड बनाने के लिए एक्टिव मार्केटिंग की जा रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ टी स्टॉल बिजनेस मार्केटिंग से ज़्यादा ज़रूरत पर टिका है। लो इनकम ग्रुप वहाँ चाय पीता है, थकान दूर करता है और वापस काम पर लग जाता है। कहा था ना मैंने, बड़े काम की चीज़ है चाय। तो मेरा अब चाय पीने का टाइम हो रहा है, सो आई विल टेक योर लीव। हैव अ ग्रेट डे।